Actor Aamir Khan, who is busy prepping for his film Dangal, is smitten by Karan Johar's Kapoor and Sons and the performances by Pakistani actor Fawad Khan and others like Alia Bhatt, Siddharth Malhotra and Rishi Kapoor. The actor saw the film at a special screening of the film organized in Mumbai on Tuesday. Here, he not only showered praises on the performances but also confessed that he became emotional in the end. It's a very good film, बहुत ही अच्छी फिल्म है। मैं तो वैसे बहुत रोता हूँ फिल्मों में, तो इसमें भी बहुत रोया हूँ। It's a very emotional film. किरदार बड़े अच्छे हैं, सारे किरदार बड़े अच्छे लिखे गए हैं और सारे एक्टरों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ऋषि सर ने तो बहुत ही कमाल ही कर दिया है, फवाद ने और आलिया ने, सिद्धार्थ ने, रत्ना जी ने, रजत जी ने, सब ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। द कैरेक्टर्स आर वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं पूरे फिल्म में। दे वेरी टचिंग मोमेंट्स इन द इंटायर फिल्म। सो आई थिंक ये फिल्म बहुत ही कामयाब होगी। आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगी। एंड माई वेरी बेस्ट विशेस टू द इंटायर टीम, to Shakun, the director, to Karan and to the entire team. All the best. Kapoor and Sons, directed by Shakun Batra, is about a dysfunctional family and its problems. It will have to be seen what will be the audience's verdict to this film when it releases this Friday. IANS report.